Well, hello guys, my name is Sushad Joshi. Welcome to this podcast video जो कहना है कहो. तो आज की वीडियो में we have Priyanka Gogoi. She is also an art of living teacher who had worked with thousands of youth in COVID times and professionals also. So from long time she is an art of living teacher and a nice friend of mine. So yeah, she has experience with youth and how to deal with them. So we're gonna talk with her and know about the problems young people like us youth को डील करती है इसके बारे में वो बात करने वाली. तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एंड तक देखो. एंड या लेट्स बिगिन. Well, hello guys, welcome back to Tea Talks. We have Priyanka ma'am with us. Well, hello Priyanka, welcome to Hi, Tushar. Hi, everyone. Tea Talks. So before we start, can you introduce yourself here? Yeah. So my name is Priyanka Gogoi. I'm from Assam, basically born and brought up there, but I left Dibrugarh at a very tender age and came to Bangalore and stayed here. Completed my graduation, post-graduation here itself. Then I started my career. I'm also an art of living teacher and have been associated with art of living since more than 10, 11 years. And I love, singing, dancing, swimming. These are my small little hobbies like all of you. And and I love to also give, a lot of courses in the related to art of living programs. Yeah. So let's begin with our topic, which is youths. She has not mentioned she has worked with youth especially. इसलिए उनको लाया मैंने, वरना और कोई भी ला सकते थे. But she has worked with youth and she have tons of questions from them. Yeah. So actually we have मैंने अभी Q&A प्लान किया था and I have many questions from them also. मैं अपना Q&A शुरू करने वाला था, but then I met you and अभी मैंने उसको कैंसिल किया, इधर ला लिया. So let's start with the first topic which I want to go with is education in youth. I'm talking about not just higher education, but the education in general. Education जो अभी स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक मैंने बहुत यूथ से या छोटे बच्चों से भी बात की, दे आर लाइक कि ये जेल लगता है स्कूल. इट्स नॉट समथिंग वी हैव फन देयर. देयर आर रिस्ट्रिक्शंस से ऑब्वियसली स्ट्रेस आएंगे, राइट? स्ट्रेस तो होगा ही. सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? हाउ कैन दे हैंडल दिस सिचुएशन in their self? Education is definitely, one of the most important thing for us. We start our life with education, actually, our a lot of pressures from our parents, from our, our teachers or supervisors, whatever. Initially, what happens? We do not have the decision-making capacity of what exactly we need to study. We are a little haywire here and there. And that's when, most of the time our parents bump into us saying, oh, you need to study this, you need to study that. And you just keep blindly following that throughout the path. And one single day you rise up, okay, this is not my cup of tea. I did not want to study engineering. I did not want to study computer science. I did not want to become a doctor. I want to do something else. So I think, as our master also keeps telling, as you know, in our organization also, it's like sometimes you need to also ask yourself what you want to do. We should develop that practice and make our younger generation also do that at a very tender age. Like what exactly you want to do, so that at the long run, aisa nahi ho ki one fine day after 10 days you get up and now you can't change your path. You are in the middle of the road. Definitely
till certain standard, like 10th or 12th, that's all right. We follow our parents, they are guide us, because we do not have the decision making capacity at that point of time. But after that, I think we should also, at certain percentage, our ideas should also bring it to implementation, taking decision regarding education, if I particularly say. Yeah. Okay. So there's one more thing happening with youth I mostly saw. They are in pressure. उनको pressure में डाला जाता है due to family, society, whatever. But you need अभी जरा कम है काफी हद तक due to awareness, I would say. But I see it very often in some families कि इतने इतने ही marks लाने हैं. And that leads them to the pressure, and pressure leads them in long run to addiction. Yeah. So what do you think? See what happens. This is the prime reason is because, first thing is, we are not able to express ourselves. First of all, what we exactly want in our life. Like I previously said, the same thing. Uh, uh, what happens is we get pressurized, and this is because of this society, right? Our parents want, of course that's not bad. Our society should, we should have a stand in the society. My son should have this marks, my kid should study in this particular university. That is fine, but that should also come along and parallel with the choice of the kid also. So if it is not parallel, if you're going only one-sided, what happens? The kid just feel very suffocated at some point of time, and they get into certain addictions or whatever you say, because they start searching their happiness in something else. If you see it's very simple. If you talk out to your peers or your parents or whoever who understands you properly, if you speak out, it becomes a little easier. But क्या होता है ना, हम कभी-कभी इस society में दूसरों को बोलने का opportunity नहीं देते हैं. We don't even give them an opportunity, and they come up doing things forcefully. It is not about education, it is about many things. Education is the first thing, or for a kid, इनिशियल डेज का डिसीजन जो होता है वो हम किसी अपने पेरेंट्स के ऊपर कंप्लीटली छोड़ देते हैं. यस, इन सम केसेस इट बिकम्स सक्सेसफुल आल्सो. यू कांट से कि मेरे पेरेंट्स ने जो बोला है वो गलत बोला है. Most of there are certain cases wherein the kids were very happy with their life. They were like very successful. Okay, I love what I'm जैसे फैमिली बिजनेस होते हैं बहुत सारे, राइट? उनके पापा बोलते हैं कि अभी बेटा तुम्हें साथ चलाना है ये बिजनेस. तो वो जब चलाते हैं उसके बाद he feels good, he feels secure, he was happy, right? So ऐसे भी cases हैं, you can't say less. But other cases what you're talking about, most of the times it is, everything starts with self. So when you start realizing, ये actually अपने parents को ही थोड़ा सा बोलना, opportunity देना चाहिए अपने kids को कि you need to speak up or tell what exactly you want to do. And regardless of the societal barriers, you never know, the kid might say, Mom, I want to play guitar, I want to be a guitarist. That might sound a little weird in front of the society, but today guitarist also can be the most successful career in this whole world. You might be the top guitarist, right? So इसीलिए बच्चे लोग addictions पे जाते हैं या खुशी किसी और चीजों में ढूंढते हैं. That's when you need friends. Friends play a very important role. So बचपन से ही we should, apart from peers or teachers or family, mom, dad, हाँ उनके साथ तो हमारा फ्रेंडशिप एक लेवल का होता है, बट हमें फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है ताकि वो फ्रेंड्स हमारी बातों को समझे. कभी कभी क्या होता है ना, इट्स वेरी, you always give a good advice, you might not be able to implement it, but your advices are very, very nice. So at that point of time, that friend might provide that perfect advice for you. Yeah, so you told your points are right, but मैं अभी अपना एक बताता हूँ कि I read history. I love to read history a lot. So when I read history about this country, there was a beautiful structure of education I saw in this country. Like there are temples we have, right? So the temples में वहाँ पे education देते थे, primary education. Teachers वहाँ पे वो देते, शिक्षक we used to call them. आप कभी टेम्पल गए होंगे तो आपने देखा होगा दान पेटी होती है छोटी सी. Why it's there? एजुकेशन के लिए दिन वो निकाली गई थी एक्चुअली. उसके बाद अलग अलग
अलग अलग पीट्स होते थे एजुकेशन के. सो टेम्पल्स में बेसिक एजुकेशन होता था, यहाँ पे शिक्षक पढ़ाते थे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे किसी से. उस टाइम का एजुकेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा. पहले वो शिक्षक पढ़ाते थे फॉर वेरी लो अमाउंट, मतलब वो भी स्टूडेंट से लेते नहीं थे, डोनेशन थ्रू चल जाता. वो स्टूडेंट्स उनके पास बहुत कम होते थे. लाइक आज प्रॉब्लम ये है, मैंने देखा है कि टीचर्स का प्रॉब्लम है. एक टीचर 40-40, 50-50 बच्चों को सिखाता है, कितना कंसंट्रेशन देगा, राइट? उस टाइम एक टीचर के अंडर 3 to 5 स्टूडेंट्स ओनली पूरे इसके लाइफ में. इन 3 से 5 बच्चों को पूरा लाइफ अंटिल दे गेट स्पेशलाइज इन समथिंग वो सिखाता था. फिर उनको और स्पेशलाइजेशन करनी तो शिक्षक के ऊपर कुछ स्पीड्स होते थे, वहाँ पे अध्यापक उपाध्याय होते थे. दे यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स. उसके पीछे वी नो देयर वर गुरुज हु वर टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज लाइक तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला एंड ऑल Yeah, दैट. correct. सो ऑल दिस वाज द सिस्टम. और इधर कहीं भी जाओ, कोई भी आए, इफ यू आर interested to learn anything, there is free education for all. आज प्रॉब्लम ये हुआ है कि education is just a business for people. It's not medium to teach, Yeah. to get knowledge. Thanks to YouTube हमारे पास अभी एक option खुल गया है to connect with people and get the knowledge. So yeah, so let's go to the next topic, which is relationships and failures. Very beautiful topic. क्योंकि relationships में भी और failures में भी आगे जाके हम दिल टूटता है. आई सी द रीजन इज हम कुछ एक्सेप्ट करके जाते कि मुझे ये मिलेगा इसमें से. व्हाट डू यू थिंक? Yeah, relationship is very beautiful. First of all, हम क्यों सोचते हैं कि it's a very painful thing or bad thing or like that. ये ऐसा नहीं है. It's a very beautiful thing and it's a very simple thing. हाँ, कोई भी चीज अगर अच्छा से you're not able to maintain it, it becomes distorted. That's all. Otherwise, any relationship is amazing. So, yeah, like especially when youth, हम जब young रहते हैं ना, like we end up liking somebody or whoever he or she, see, it is the person that we think that because of that person we are going through this, or we start objectifying certain किसी को हम लोग मतलब सोच लेते हैं हाँ उसकी वजह से हमें ये हो रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, उसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ. All these things happens and you end up in that word called as failure. First of all, मैं ये accept नहीं करती हूँ कि लाइफ में failures होते हैं. लाइफ में फेलियर्स नहीं, वो जस्ट those क्या बोलते हैं, the hurdles, or it's just a journey. It's just a journey in the path. It's a lesson. So उसी दौरान आपका ग्रोथ भी होता है. Relationship, that's why I said it's not bad. हाँ, बच्चे पढ़ जाते हैं. It takes a longer time to come out of one relationship and then move on again, because simultaneously this happens. आपका पढ़ाई भी चलता है, you start liking also, you end up in a relationship also. So relationships इसीलिए बोला जाता है कि एक strong relationship, especially partnership वाला जो relationship है, वो एक certain age में होना जरूरी होता है, तब ये maturity रहता है. नहीं तो क्या होता है, you end up having this relationship with one and another, whatever, multiple partners or whatever, and that's when it drains your energy. Sometimes you have to protect yourself also. आप अपना ख्याल रखना जरूरी होता है. हम लोग क्या करते हैं रिलेशनशिप में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गिव द अदर पर्सन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि वो हमारे लिए जरूरी होता है, कि उसको खाना पीना जरूरी है, उसके लिए सब कुछ करना है, उसके लिए गिफ्ट खरीदना है, वैलेंटाइंस डे है, उसको लेके जाना है. We should take care of others, but not at the cost of not taking care of ourselves. अपना ख्याल रखना जरूरी है. आप जिस इंसान के साथ हो, is that person safe for you? Safe in the sense, is that person making you feel good? Is that person उसके साथ आप फ्रेंड जैसे रह पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि most of the times क्या होता है रिलेशनशिप में, we also are with some wrong people. Kids are with some wrong people when they don't analyze it. They're not able to analyze it, and that's when this obsession comes in, or failure comes in, or these kind of words come into the picture. ये
एक लर्निंग होता है जो एट द एंड ऑफ द डे हर एक बच्चे को समझ में आ जाता है. Yes. So इधर मैं इसी क्वेश्चन को अलग तरह से पूछता हूँ. आपने बोला था कि failure isn't not failure isn't harder, but my question was in a perception कि I also know that, but the question was जो failure में जो pain होता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, जो डिप्रेशन फेज होता है उसमें वो पर्सन कैसे हैंडल कर पाए. एट ब्रेकअप्स वी कैन कॉल आल्सो कैन से एक ऐसी सिचुएशन में ब्रेकअप्स इधर वो उधर ही बोल रहा था कि वो एक्सेप्ट करता है कुछ कि मेरे को ऐसा ऐसा पर्सन मिलेगा लाइफ में या कोई किसी के लाइफ कोई लाइफ पार्टनर है, ही विल दैट पर्सन में थिंक कि मुझे उससे कुछ एक्स वाई जेड चाहिए, एक्सेप्टेशन होगी, बिहेवियर व्हाटएवर, इमोशनल व्हाटएवर, और वो एक्सेप्टेशंस पूरी नहीं होती तो उसका दिल टूट जाता है, क्लैशेस होते हैं. सेम विथ लाइफ एक फेलियर है, एग्जामिनेशन फेलियर. एग्जामिनेशन का एग्जांपल लेते हैं, पढ़ाई करने जाता है, बहुत अच्छी से पढ़ाई करता है, स्टूडेंट गिव्स 100%, बट वो एक नंबर दिमाग में रखता है कि आई विल गेट दिस 90%, 95%. एक मार्क भी कम हुआ तो लोगों का दिल टूटते इधर. सो व्हाट अबाउट दैट मेंटालिटी? इस इम्पैक्ट के बाद क्या है, एक अंदर तो स्ट्रॉम आता है, बड़ा तूफान आता है, उससे कैसे हैंडल करें एज पर यू? डेफिनेटली इट इज अ टफ फेज. तुम जितना भी बोलो, बोलना बहुत इजी होता है, राइट? इट इज ऑलवेज इजियर सेड देन डन. And especially for a youngster or a student who expects this much of marks, we all have gone through that phase. हम सब गुजर चुके हैं. उस वक्त, it's only a fraction of second. उस वक्त हमें ये पहचानना बहुत जरूरी होता है कि क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है. That particular phase, जब when we get disappointed with our certain marks, हमें लगता है कि नहीं, मेरा तो जिंदगी खराब हो गया. But when you look back and you see, वो moment तो खत्म हो गया. You have grown far ahead, right? तो वो उस वक्त, like I said, you always need some good friends to talk about, or your parents should understand कि ये बच्चा इस दौर से गुजर रहा है, and for that you need to open up. लोगों को लगता है हम अगर बोलेंगे, बच्चों को लगता है हम अगर बोलेंगे कि मैं दुखी हूँ या आई एम नॉट वेल, people might take it in a different way. They might think I'm a failure or I'm disastrous. I have not got this mark. So how will I be able to cope up with my friends? But देखो, कोई भी स्टेट डिफिकल्ट तो होता है, but it always has a plus point. Opposite values are complementary, right? So it's like उसके बाद definitely there is a sunshine, but you at that moment of time you need to understand what are the next step you're going to take, and you have to have full faith on that next step जो भी आप ले रहे हो. आपको अगर दोबारा वो एग्जाम लिखना है तो आप ये सोच ले कि why won't you be able to achieve that mark that you're dreaming for? That is definitely possible. तो उस फेथ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है उस वक्त. तब आप यू आर नॉट एबल. बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने आपने देखा होगा, ends up in suicide or ends up in they feel like, no, it's done, I do not want to get up again. Getting up is very difficult after failure, right? It's very difficult getting up, but you know what, that is the only lesson you need to learn. Once you get up, you just need to take that one step, and immediately that 99 step will be open to you. But yeah, ये उसको हर एक बच्चे को जानने का जरूरत है कि I need to take that first step first. That first step may be just connecting with your friend, talking to your friend, मम्मी पापा को बोलने का ये कि okay, I want to do this, ये करने का मन है मेरे, I'm feeling, I'm going through it. Expressing about your feelings, expressing about your emotions is not bad. बहुत लोग समझते हैं कि हमें एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, लोग हमें जज करेंगे, क्या करेंगे. ऐसा नहीं है. You need to open up. Yes, you need to be just aware of whom you are talking to. आप किसके साथ बात कर रहे हो, क्योंकि सोल्यूशन मिलना भी तो जरूरी है ना. Yes. So one more question is, one of my friend asked me, just coming Q&A करना था, now I'm asking you. He is 26 and he is confused. Should I get married now? He's having a nice relationship and he's confused. कि अभी करूँ, when is the right time basically?
What is it? Well, ये ख्याल marriage का तब आता है when you feel little lonely, when you want a partner basically, right? Marriage is a societal thing. It's a very beautiful thing. करते हैं हम लोग, we get a good partner, but everything has a right age for it, right? इसीलिए ये सोसाइटी वैसे बनाया गया है आपके सामने, everything has a rule, pros and cons, right? तो इसलिए बोलते हैं 18 years के above में ये करना चाहिए, ये और आजकल की generation में तो rules are changing also, okay, so most of the people are going above 30s and getting married. Some people do not want to get married also. So हाँ, एक maturity आना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए. Marriage is definitely, you would always want to have this law for your lifelong. You are going to spend your time with your partner, right? So एक mental maturity भी होता है. So definitely, I'm not saying 26 is not the right age, but आप अपने maturity को check करें कि आप ready हो ऐसे आप responsibility लेने के लिए और उस रिश्ते को निभाने के लिए. वो क्वेश्चन अगर उसका जवाब आप अपने आप में अगर ढूंढ लेते हो, then you will get to know that. But I would definitely think that you need to wait for some more time and figure out certain things in your life, make your, इसलिए हम बोलते हैं ना, हाँ कैरियर ठीक करते हैं हम थोड़ा, अपना जॉब ठीक करते हैं, क्यों बोलते हैं हम? So that तब तक हम थोड़ा mature हो जाते हैं. It's not only about getting money, it's not only about becoming the most successful person in the world. वो बात नहीं है. बात ये है आप तब तक mature हो जाते हो. Then you are able to commit somebody else. See, marriage is about किसी और का लाइफ भी आपके हाथ में है, ये सिर्फ आपके हाथ नहीं है. So दोनों का फीलिंग्स एंड दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों के इमोशंस को टुगेदर चलना अगर है तो एक मेच्योरिटी लाना बहुत जरूरी है. तो एक सर्टेन एज में होना बहुत जरूरी है और ये आप ही डिसाइड कर सकते हो. मेरा भी आंसर इतना होगा, बस जरा सा शॉर्ट होगा. इसने मुझे पूछा था, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. जो आपने बोला वही समा. एवरी टाइम इज अ राइट टाइम. बस चेक इफ यू आर रेडी फाइनेंशियली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली. तुम भी और तुम्हारा पार्टनर. वेरी नाइस, ब्यूटीफुली सेड. या दोनों यदि इन तीनों पैरामीटर्स पे रेडी हो, यू कैन गो फॉर इट. ओके, देन one more question. I don't know किसका है ये. Yes, I am 27, still unemployed. I don't have any work. Feeling depressed. What can I do? What do you think? Are you working for it? आप ढूंढ रहे हो? कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग एंड रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं बिफोर इवन वर्किंग फॉर इट. आप ढूंढने का कोशिश तो करो, क्यों नहीं मिलेगा? सबको मिल रहा है. अगर कोविड के टाइम में भी लोगों को नौकरी मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता है? या सर्टेन टाइम्स व्हाट हैपेंस, आप अप्लाई करते रहते हो, होता नहीं है, और ऑल दिस ऑब्स्टेकल्स कम्स इन, बट मिलेगा, जरूर मिलेगा. ये सिर्फ हमारे मन में रहता है कि ओके आई एम ट्राइंग अ लॉट एंड ऑल. बट हाँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट और इट्स टेकिंग लॉन्गर टाइम, आप कुछ कोर्सेज वगैरह कर सकते हो. आप कुछ you can do something, you can learn some yoga sessions and all. That's why all these things are there, no, to uplift yourself. अपने ऊपर काम कर सकते हो. तो अपने ऊपर जब काम करने लगोगे, then automatically the doors will be open to you. Yes. तो इसका मेरे लिए, मेरे तरफ से आंसर विल बी लाइक, प्रॉब्लम इधर क्या है मेरे को देख रहा है कि ही इज नॉट फीलिंग रॉन्ग कि उसको जॉब नहीं मिली. प्रॉब्लम इसका ये है, एज पर आई एम गेटिंग दिस पर्सन इज 27. उसका प्रेशर आ गया, सोसाइटी का प्रेशर. इधर ही सेम थिंग, सोसाइटी का प्रेशर है कि आई एम नॉट गेटिंग जॉब एट दिस एज. ऐसे लोगों को फैमिली से गालियां पड़ती है, सोसाइटी से गालियां पड़ती है. सो ही इज बीइंग हैमर्ड इन दैट वे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आंसर यू भाई कि पहले शांत हो जा, अंदर से शांत हो जा. डोंट बी पैनिक. लोगों को मत सोचो, दैट्स देयर नेचर. ह्यूमन सोसाइटी नेचर है. आई ऑलवेज से, जैसे सुनने में रूड लगेगा बट दैट्स अ फैक्ट. जैसे कुत्ता भौंकता है, सोसाइटी बोलेगी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. तुम अच्छा करोगे तो भी बोलोगे, बुरा करोगे दे विल आल्सो अगेन टेल यू. फॉरगेट अबाउट पीपल, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ. काम डाउन, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ. क्या करना है एंड वो क्यों करना है, ये भी.
एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, सोसाइटी मन में आएगा ही नहीं आपका. वो तो आता है तभी जब आप खाली रहते हो. So start with do something like Priyanka said, start doing some yoga. It will help you. मेडिटेशन कर सकते हो. Meditation है, you have many things online, so जाओ करो. Yes. It's good for you. Yeah. So let me get back to my questions. What I have, yes. So there's one more thing. Addiction and obsessions अलग अलग होते हैं लोगों को. Like addictions of anything, alcohol, cigarette. लोगों को तो आजकल कॉफी का भी एडिक्शन होता है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है. सो एडिक्शन पे मैंने स्टडी किया है. आई एम ए काउंसलर ऑल्सो, इफ यू डोंट नो. लोगों से बात की पर्सनली, मैंने बहुत ऐसा स्टडी किया इनको, तो इनको देखा है मैंने कि दे आर, जब भी उनके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, दे गेट एक्सट्रीमली लो ड्यू टू स्ट्रेस. मेजरली स्ट्रेस से होता है, बाकी भी रीजन है, बट स्ट्रेस इज अ मेजर रीजन. आइदर उनके पास कुछ नहीं होता या बहुत कुछ होता है, अंदर बहुत पकड़ है, कुकर की तरह तो फटते हुए, और दे वांट सब ब्रेक फ्रॉम दिस थिंग. सो वो एडिक्शन की तरफ बढ़ते, राइट, टू एनी काइंड ऑफ एडिक्शन. कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा कि कॉफी चाय चाय नहीं पी एक टाइम को सर दर्द होने लगता है. यू मे आल्सो सीन द सच पीपल. सो व्हाट डू यू हैव टू टेल अबाउट दिस पीपल, एनी मैसेज फॉर देम? सी addictions मतलब क्या होता है? You think that that is going to give you happiness. ये सब हमारे, we think that coffee is going to make my day amazing. You think that cigarette is going to make my till next 3 hours I will be very energetic. You know, ये short term happiness and long term misery जो वाले जो चीज है ना, that will always give you a lot of pain. So ये हमें सिर्फ लगता है कि वो हमें खुशी दे सकता है, बट खुशी नहीं देता. आप जो ढूंढ रहे हो ना असली खुशी, वो इन सब चीजों में है ही नहीं. आप गलत जगह ढूंढ रहे हो. तो जब आपको ये चीज पता चल जाती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली एडिक्शन से हट जाते हो. एंड कोई भी गलत चीजों से हटना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना आप सोचते हो. हमें भी लगता है हाँ सिगरेट छोड़ना कितना मुश्किल है. ऐसा नहीं है. पता है, आपको अगर पता चल जाता है कि दिस इज अ रॉन्ग एक्ट, इफ आई डू दिस आई विल बी इन जेल, then you will not do that, right? Even if you are addicted to certain bad things, if you know certain rules, laws क्यों निकले हैं हमारे यहाँ, क्यों अवेयर करने के लिए, राइट? सो जब आपको पता चल जाता है, अब सिगरेट बॉक्सेस में ये पूरा फोटोज क्यों डालते हैं वहां पे, जस्ट लोगों को अवेयर करने के लिए. कहीं ये फोटो देख के वो खुद ही बोल रहा है, अगर फोटो देख के आप बंद कर दो पीना आपके लिए अच्छा है, या सो वो बस अवेयरनेस की देरी होता है. जिस दिन आपको वो अवेयरनेस आ जाता है कि ये तो मुझे लॉन्ग टर्म खुशी देने वाले नहीं है और मेरा हार्म करने वाले हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो एडिक्शन विच इज एन इल्यूजन वो हट जाता है. एंड ऑब्सेशन, ऑब्सेशन भी वही होता है. ऑब्सेशन कब होता है? जब आप वही खुशी की, यू वांट द एक्चुअल हैप्पीनेस व्हिच यू पुट इट ऑन समथिंग एल्स, राइट? लाइक इफ यू वांट अ ड्रेस, उसमें आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि मुझे वो ड्रेस चाहिए चाहिए, क्योंकि आपको लगता है वो ड्रेस पाने के बाद आप खुश हो जाओगे. अगर आपने पा भी लिया उसके बाद वो खुशी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, होता नहीं है. आफ्टर यू वेयर द ड्रेस, ओह आई वाज सो हैप्पी, आई सो वांटेड दिस ड्रेस, आई गॉट इट. उसके बाद अब वो ड्रेस कबर्ड में पड़ा रहता है next 6 months to 1 year, right? And one day you give it to your whomever, donate. So obsession just a phase hota hai. You put it on certain things or certain situations. अगर आप उसको पहचान, everything is awareness. अगर आपको उसको पहचान जाओ ना, छोड़ना बहुत easy हो जाता है. Yes. So let's see one. Any other questions from people? Yes, this is an interesting one for me. Okay, क्या question है? I am addicted to pornography and masturbation. How can I deal with it? Okay, it's an interesting question. So इसका simple answer है. से बुरा लग रहा है इधर देख के लग रहा है. Don't feel sad first of all. Masturbation is normal. बस उसको obsession is problem. It's natural. इंसान को primitive thing है, खाना पीना as normal as eating. Don't be obsessed first of all. And खुद को guilty feel मत करो इससे. You can just practice some meditation and do yoga. बस उससे तुम्हारा बहुत हेल्प हो जाएगा. Do you want to say anything, Aman? Yeah. देखो,
you know, there's the happiness, what's the meaning of happiness, वो जानना बहुत जरूरी है. ये जो whatever pornography or sex or whatever, this just gives you a little bit of happiness, you know. आपको होता है ना, like I don't know, whatever, if you watch a movie and after that you find yourself in the same state at the end of the day. आपको लगता है कि similarly like we spoke about cigarette, you know, आपको long term happiness, ये short term happiness है, ये सब आपको बस इतनी कम खुशी आपको मिलती है ना, जिसका आप खुश, आपके पास बहुत कैपेबिलिटी है खुशी पाने के लिए, यू नो. दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट वी गेट इनटू. आपको एंड आपको जब वो बड़ा खुशी का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, और वो एक्सपीरियंस कब होता है, व्हेन यू do certain things for yourself, exercise, meditate, walk, or whatever you feel good about yourselves. When you experience that happiness, ये small small जो चाह है, जो you know, whatever these desires, that will end up. Yes, simple thing. So और कुछ points बता देता है. Start, as she said, start working out on your body, starting working on your mind. और फ्री मत बैठो, as गुरुजी says. फ्री बैठोगे तो आएंगे ज़्यादा thoughts आएंगे. Yes. Do anything. You can meditate. You can do your practice some skill, learn new skills. Make yourself more creative. Involve in creative. Yeah, this is one more important point. You know, your sexual energy is interlinked to a creativity, right? So आपका जब वो energy नीचे की तरफ जाता है, you need to focus on your creativity. कुछ भी creative आप करोगे, automatically वो energy transform हो जाता है. Yes, क्योंकि ये याद रखो भाई कि जो फीलिंग्स आ रही है वो नीचे से नहीं ऊपर से आ रही, इधर से आ रहा है सब कुछ. तो इसको सही दिशा में लगा दोगे, ऐसे से ये प्रॉब्लम इज सॉल्व, नॉट अ बिग डील. यस. और कोई बहुत लोग अभी मेरे को ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आए, मैं ब्रीफ में रखता हूँ. इसका आंसर मैंने एक वीडियो में दे दिया है, पर्सनली मैंने एक सोलो पॉडकास्ट किया था उसमें. हाउ टू बी अ गुड पेरेंट, आई एम गोना बी अ पेरेंट. ओके, इसका सिंपल आंसर मैंने दिया था, फिर भी अभी इसको और शॉर्ट कर देता हूँ. आप विष्णुगुप्त चाणक्य पढ़ोगे, उनकी बुक्स में उन्होंने 3 लाइन में बता दिया. फर्स्ट 5 years बी अ पेरेंट, उसके बाद 10 years के लिए बी अ टीचर, शिक्षक बनो, उनको टीच करो लाइफ में. और आफ्टर दैट बी हिज फ्रेंड. हम जिंदगी में पेरेंट बने रहेंगे तो प्रॉब्लम आने वाली, फिर वो छोड़ जाएगा एक टाइम के बाद. व्हाट यू थिंक? Yeah, very beautiful said by Tushar. Yeah, good parent also comes with the you know, upbringing, right? आपको जो culture, वही तो बोलते हैं ना, हमें जो संस्कार मिले हैं, आप वही संस्कार अपने बच्चों को देते हो. So अपने आप को पहले ठीक करना बहुत जरूरी है. वो संस्कार good parent experience से होता है, जैसे तुषार ने बोला. You know, first few years, certain years you become a teacher, certain years you become a learner, whatever, you know. तो आप जो सीखते हो वही आप सिखाते हो. आप ऐसा कोई भी टीचर वो सिखा नहीं पाता है जो उन्हें नहीं पता है, राइट? सो आपको पहले सीखना, भले एंड एज डजंट मैटर, यू माइट बी ऑलरेडी अ पेरेंट राइट नाउ, या, सो यू कैन लर्न एंड देन टीच. यस, दैट इज द थिंग. मैंने ऑब्जर्व किया और एक बात, पेरेंट्स फर्स्ट. पेरेंट्स मेरे पास भी आते पूछने के लिए कि हमारा बच्चा फोन पकड़ के बैठता नहीं, बात हम डांटे. सो ये याद रखो हमेशा टू पेरेंट्स, चिल्ड्रन डोंट डू दैट. जो आप उन्हें सिखाते हो, दे फॉलो यू. वो आपको फॉलो करेंगे. आप यदि फोन पे बैठे हो और उससे बता रहे हो फोन बुरी चीज है, हाउ विल दे लर्न इट? तो गलत कौन है, आप या आपका बच्चा है? सोच लो. एब्सोल्युटली. और हम ये देख के, हम बाकियों को देख के, अरे उनके बच्चे फोन पे लगे रहते हैं, दे आर डूइंग गुड. दूसरों को देख के बहुत हम लोग सोचते हैं कि अच्छे से हैं, यू नो, दे आर डू मेकिंग, यू नो, मेकिंग देयर, गिविंग वेरी गुड कल्चर टू देयर किड्स. ऐसा नहीं है कि जैसे पुराने जमाने में होता है ना, बच्चों को ग्राउंड में लेके जाओ खिलाने के लिए. व्हाई ऑलवेज यू नीड टू यूज द डिजिटल थिंग्स टू मेक देम प्ले, यू नो? जरूरी नहीं है. सो यू हैव टू inculcate and वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो. स्पेसिफिकली यदि आपका बच्चा 10 साल से अंडर है, he must play on the grounds. मेजोरिटी पढ़ाई में उसको 50% मिल रहे, पास हो रहा है, 30% मिल रहा है, चलेगा, बट हिज बॉडी इज ग्रोइंग एट दैट एज. उसकी बिल्ड मजबूत होनी चाहिए. उसको खिलाओ, ज्यादा से ज्यादा खिलाओ. उस 5-10 साल तक उसकी बॉडी को मैक्सिमम फोकस दो.
तो आगे जाकर उससे इतनी बीमारी लगेगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते फिजिकल लेवल पे। एटलीस्ट टिल एज ऑफ 10, 15, 16 से खेलने दो, बहुत खेलने दो, क्योंकि एक टाइम बाद पेरेंट्स का होता है, प्रेशर होता है कि उसको 10th में इतने मार्क्स, वो कोई नहीं पूछने वाला एक टाइम के बाद। और उसकी बॉडी खराब होगी तो जिंदगी भर उसको तकलीफ होगी, वो आपको ही गाली देगा आगे जाके। रिमेंबर दिस। सो पेरेंट्स नीड टू एजुकेट फर्स्ट, आई थिंक। या सो या एनी, अभी आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछ लो। आई हैव एंड विद क्वेश्चंस, I एनी think टॉपिक्स, एनी क्वेश्चंस? I think we had a very beautiful talk on the youths. All we had covered, almost all. Okay. I think Yeah. that's great. Okay. So thanks for coming and thanks for answering the Welcome. Thank you. answers of our subscribers. And yeah, we will meet soon. I want you again and again on this channel. So thanks for watching. प्लीज दिखा अभी तक आप इधर हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लोगों तक पहुंचा। तो ये मैसेज पड़ा रहेगा, किसी के पास नहीं रहेगा, भूल जाइए कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। सो प्लीज जाओ, Yes. सब्सक्राइब करो एंड या कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय।